अब मैं दावत दूंगी आमिर अल्लाहवाला साहब को, जो टेक्नो पार्क इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से हैं। अब मैं दावत दूंगी मिस्टर ज़िशान कुरैशी को, जो डिप्लॉय प्राइवेट लिमिटेड से हैं। अब मैं दावत दूंगी फैसल मोती को, जो कि यूनाइटेड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से हैं। मिस्टर फैसल मोती प्लीज स्टेज पे आइएगा। हमारा म्यूजिक चलता रहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा साथ साथ। मिस्टर फैसल मोती। अब मैं दावत दूंगी मिस्टर सरदार खान को, जो बेलको ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से हैं। मिस्टर सरदार खान। अब मैं दावत दूंगी अब्दुर्रहमान साहब को, जो स्विफ्ट बिज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से हैं। मिस्टर अब्दुर्रहमान। अब मैं दावत दूंगी मिस्टर फैसल महमूद को, जो क्लब मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड से हैं। ऑलराइट, मिस्टर फैसल महमूद प्लीज सर स्टेज पे आइएगा। अब मैं दावत दूंगी मिस्टर खतीब को, जो इन्फोकॉम गैजेट्स प्राइवेट लिमिटेड से हैं। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। अब मैं दावत दूंगी मिस्टर नकी को, जो प्रीमियर कोड प्राइवेट लिमिटेड से हैं।
अब मैं दावत दूंगी मिस्टर इरफान यूसुफ को जो यंग टेक प्राइवेट लिमिटेड से हैं। अब मैं दावत दूंगी मिस्टर अहमद असद को जो पोल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से हैं। अब मैं दावत दूंगी मिस्टर पाशा को जो एएस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड से हैं। अब मैं दावत दूंगी मिस्टर मुबीन को जो रोदास प्राइवेट लिमिटेड से हैं। सर प्लीज कम एंड रिसीव योर अवार्ड। अब मैं दावत दूंगी मिस्टर अदील अकबर को जो हाई स्टार मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड से हैं। अब मैं दावत दूंगी मिस्टर आसिम को जो फेवा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से हैं। अब मैं दावत दूंगी कर्नल इमरान सईद साहब को जो अल्फा ई नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड से हैं। All right, thank you so much. This was the award ceremony. Thank you so much, Mr. Murtaza Mahmood साहब, आप यहाँ पर आए, आज तशरीफ लेकर आए। All right, अब मैं दावत दूंगी मियाँ अब्दुल रहमान साहब को। उन्होंने कुछ वो रखवानी है ना डाइस यहाँ पे, वो कह रहे हैं वो लगवा दें।
थैंक यू सो मच कि आप सब लोग आज यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन हमारे दरमियान मौजूद हैं, मुर्तज़ा महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। इट लुक्स रियली अमेजिंग कि आप इस कदर एक तरक्की के लिए अपनी सारी एफर्ट्स पुट इन करें। इट रियली मीन्स अ लॉट। और आज हम सब यहाँ पे इसी वजह से मौजूद हैं और आज आपको यहाँ पे पाके बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं आप सब लोगों को बताती चलूँ कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियां अब्दुल रहमान साहब, जो इस वक्त एक हम लोगों से अपने दिल की बात शेयर करने जा रहे हैं। देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। चेयरमैन मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन हैं आप सर, प्लीज़ आइए और हमसे अपने इज़हार ख्याल कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले हम अपने थैंक्स कहना चाहेंगे अपने ऑनरेबल मिनिस्टर मखदूम मुर्ज़ा महमूद साहब। और आज जो एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया, हम एक एक्स्ट्रा थैंक्स कहेंगे स्पेशली ईडीपी का, ईडीपी के चेयरमैन अलमास हैदर साहब का, सीईओ रज़ा अब्बास साहब का, जीएम पॉलिसी आसम अयाज साहब का। आज आपने जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, सारी फैमिलीज़ को आपने इकट्ठा किया, आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। प्लीज़ ईडीपी के लिए एक ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं अपने मिनिस्टर साहब को, अपने चीफ गेस्ट साहब को बताना चाहूँगा कि पीटीए हमारे नुमान खालिद साहब, तालिब डोवर साहब और उनकी सारी टीम का भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जो उन्होंने 2013 से 2018 तक 19 तक डब्स लॉन्च करने में अपनी सारी स्ट्रगल लगा दी। इस मुल्क की बका के लिए स्मगलिंग को ख़त्म किया, ये मेन वो भी एक कॉज थी। इनको भी हम मिनिस्टर साहब खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने स्मगलिंग बंद की और हमें लीगल इंपोर्ट पर लेकर आए। उसके बाद हम सारी पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, सारे 31 जितने भी मैन्युफैक्चरर थे, हम खराज तहसीन पेश करेंगे आज अपने मिनिस्टर साहब का, मखदूम मुर्ज़ा महमूद साहब का, जो हर जगह पे हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां भी हम मुश्किल में फंसते हैं उसमें हमें बड़े प्यार से, आसानी से एज ए फैमिली निकाल कर ले जाते हैं। हम तालियों की गूंज में इनको खराज तहसीन पेश करेंगे आज। और आज इन्होंने हमें सबको एक विजन दिया है हमारे खाने की टेबल पे। आज उन्होंने हमें एक एज ए फैमिली सपोर्ट करते हुए कहा है कि आप पॉलिसी लेकर आएं, मैं आपके लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके 10 साल के लिए आपकी पॉलिसी को कंफर्म कर दूंगा। इसके लिए बहुत बड़ी क्लैपिंग होनी चाहिए, ताकि कोई गवर्नमेंट आए ना आए लेकिन आप लोगों का पहिया चलता रहे। उन्होंने अपने मुल्क के लिए रियली, हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं और तहे दिल की गहराइयों से आज आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुल्क की बका के लिए खड़े हुए हैं। जो मुल्क मुआशी बहरान में है उसको निकालने के लिए आपने जो आज सपोर्टिंग रोल अदा किया है, तारीख इसके लिए इंशाअल्लाह ताला गवाह रहेगी। और मैं आप सबको आज बता दूं, जिस तरह हमारे मिनिस्टर साहब हैं, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, हमारे पीटीए है, ईडीपी है, याद रखें यही वो सतून हैं, यही वो पिलर हैं जिसके ऊपर आज हमारा पाकिस्तान मुल्क अभी तक खड़ा हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हीं सतूनों की वजह से आज हमारा मुल्क इंशाअल्लाह ताला आगे भी चलेगा और तरक्की की तरफ गामजन रहेगा। मैं सबसे पहले अब एंड पे सबका थैंक यू कहना चाहूंगा, जो भी सारे इवेंट्स पे आए, मीडिया आया, सारी फैमिली सारी आई, सारा डिपार्टमेंट्स आया, हमारे मिनिस्टर साहब आए, ईडीपी, पीटीए, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। अभी हम ये करने जा रहे हैं कि पैनल डिस्कशन हम करेंगे और हमारे साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे पैनल डिस्कशन के लिए, उनके नाम भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे मिस्टर नुमान खालिद सर, प्लीज स्टेज पर आइएगा, डायरेक्टर पीटीए हैं आप। हमारे साथ मौजूद होंगे मिस्टर आसिम अयाज, जीएम पॉलिसी ईडीबी हैं आप, सर प्लीज स्टेज पर आइएगा।
हमारे साथ मौजूद होंगे मिस्टर मोहम्मद नकी, CEO प्रीमियर कोर्ट हैं आप। सर प्लीज स्टेज पर आइएगा। हमारे साथ मिस्टर आमिर अल्लाहवाला हैं, CEO ट्रांसियन, प्लीज यहाँ आइएगा। और मैं दावत दूंगी मिस्टर ज़िशान नियानूर साहब को, जो CEO इनोवी टेलीकॉम हैं। इसके साथ साथ मैं दावत दूंगी मिस्टर अहमद को, जो CEO हेलो टेक मोबाइल हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इस सारे पैनल डिस्कशन को चेयर कर रहे होंगे रज़ा अब्बास शाह साहब, जो कि CEO हैं इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड हैं। सर प्लीज अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। He'll be sitting there. Okay, sure. All right, so we're talking about overcoming the barriers and we're talking about striving for a better Pakistan, for a better mobile industry in Pakistan. इसके हवाले से अगर हम बात करें तो हम इन हवालों से भी बात करते हैं कि लोकलाइजेशन होनी चाहिए। वो चीज़ें जो बाहर बन रही हैं अगर वो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होंगी तो हमें यहाँ पर बहुत आसानी होगी। इस मोबाइल इंडस्ट्री के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट हियर। अगर हम बात करें लोकलाइजेशन की तो इसमें पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स आते हैं, जिसके अंदर इसके अंदर जो है वो एलाइड इक्विपमेंट्स भी आते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की। हुकूमत अगर एक आम आदमी को बिजनेस करने के मौके फराहम करती है तो उस आदमी के लिए ऑब्वियसली ये एक प्लस पॉइंट होता है। छोटे बिजनेसमैन भी इसमें आ जाते हैं और बड़े बिजनेसमैन भी इसके अंदर आ जाते हैं। हम इन सब के बारे में भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ज़र मुबादला किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को सहारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। इस डिस्कशन का हम आगाज़ करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस भी हम लेंगे और इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। अगर आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएंगे और आपके पास हम माइक भिजवा देंगे और फिर आप लोगों के सवालात का सिलसिला चलेगा। हमारे पास यहाँ पर बैठे हैं बहुत ही सीनियर लोग जो इस वक्त हमें तमाम क्वेश्चंस के बहुत डिटेल्ड आंसर्स दे सकते हैं। तो लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सर प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। ऑलराइट, इस सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। हमारे साथ जो स्पीकर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारे मेहमानान हैं, उनके हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। सर प्लीज़ बारी बारी अपने इंट्रोडक्शंस करवाइएगा। मेरा नाम मोहम्मद नकी है जी। आई एम CEO फॉर प्रीमियर कोड। वी हैव आवर ओन पाकिस्तानी ब्रांड कोड एंड अमंगस्ट द फ्यू पाकिस्तानी ब्रांड्स हु आर competing with international brands for the smartphone category and providing premium products. ऑलराइट सर प्लीज़। मेरा नाम नोमान खालिद है। आई एम डायरेक्टर टाइप अप्रूवल्स एट पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। सी आसिम अयाज, जनरल मैनेजर पॉलिसी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। जी, मेरा नाम आमिर अल्लाहवाला है। ग्रुप टेक्नो इज मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन्स अंडर इन्फिनिक्स टेक्नो एंड आईटेल ब्रांड एंड वी आर आल्सो पार्टनर्स फॉर नोकिया मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग। मेरा नाम ज़िशान मियानूर है और वी आर डूइंग फॉर द लास्ट 20 ईयर मोबाइल इंडस्ट्री। और हम पाकिस्तान में टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। इसके साथ साथ हमारा एक लोकल ब्रांड है सेगो, जो हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां अहमद असद है। मैं CEO हूँ पोल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। आवर ब्रांड नेम इज़ हेलो टेक। वी आर 2G फ़ोन मैन्युफैक्चरर। मैं आपको एक स्टार्टअप और एक छोटी कंपनी का पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। ऑलराइट, दैट्स रियली अमेजिंग। सो क्वेश्चंस का आगाज़ हम करते हैं। आप में से किसी का भी क्वेश्चन आप प्लीज़ हाथ रेज कर सकते हैं। आप प्लीज़ माइक वहाँ पे पहुँचा दीजिएगा। यहाँ, दैट्स इन द मिडल ओवर हियर। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ziyan Sari. We are in the process of setting up a mobile charger manufacturing unit with a Chinese counterpart who is a major supplier of
chargers in Pakistan. In our facility, we would be basically starting from SMT line, dip line, assembly line, automatic testing, and burning line, which would be a complete integral facility. Our partner, basically, IO Technologies, is a major supplier to main telephone manufacturers in Pakistan. My question is very simple, and that is first to EDB, and the second is basically to the manufacturers. To EDB, the question is that on parts and components which we would be importing for manufacturing of chargers, the duty ranges from 20%, 17%, 18%, with an additional duty of 6% and RD of 10%. So, which makes the local manufacturing basically uneconomical. On the contrary, on a charger, the tariff is 11% with 2% AD. So, to make this transition a success, we have to make some sort of a mechanism where a tariff for manufacturer and a tariff for a journal importer has to be defined, and it can be an input-output situation or something like that. The second question is basically to the manufacturers, that we would definitely need their support and input. What we can guarantee that the chargers we are going to manufacture, they would be 100% identical to what they are importing from our joint venture partners. Because all parts and components and some of your specialized chips would be coming from them. And they would be directly responsible for the quality management and quality procedure. The third thing, we anticipate that we would come into the commercial production by the 1st July 2024. So, but the transition is that on this 30th, the mobile chargers is becoming, on the be removed from the list. So how do you respond to this?
I think I see no reason why, and the association would also be pushing for localization, that there is no reason why the local assemblers would not buy parts from the local industry. Now the key point is, as I mentioned in my presentation, the cascading of the tariffs is very important, which means that the raw material has to be at 0%, then the part of the part, means the charger component should be at maybe 5%, then the finished product should be at 20%. So there should be a certain, and this we have implemented very successfully along with the EDB in the automotive sector, it works very well. So this kind of a cascaded tariff we have to prepare, and for that we really need the support of EDB along with the MOI and especially the FPR. So I think we are going to move in that direction. So it's very heartening to see that you are coming up with this project, and I hope that there will be many others who would also venture into this project. There is going to be very, very tough competition, because the investment requirement is not so high, and there will be, and this is very good. And so I think the next step for you, sir, is to also start preparing for the localization of the plastic components of the charger and some other parts that the charger utilizes. So that's what I believe is the manufacturer's viewpoint. Motherboard. We'll have our own SMT line with the pick and place machines. We'll have our own dip lines. We'll have our own basically assembly line. Then we'll have our own automatic testing line and all that stuff, and the injection molding. And ultimately, after injection molding, the chargers would be welded ultrasonically. So we would be providing you a complete product and with a warranty on the product. As far as the guarantee of delivery is concerned, we would definitely like to work with the industry and like to enter into a long-term contracts where we can schedule the delivery thing, because definitely you don't want the delivery of everything in one day. So delivery has to be scheduled. We can schedule the delivery. We'll meet our commitments because this project by itself, once you look at it, it's not an SKD thing where we are just importing the board and just assembling the body. It's a complete process. In this, we do understand that some of the mobile companies, they have their proprietary chips. So that's why we entered into the joint venture, because that company is one of the world's biggest charger manufacturers, and they have access to those proprietary chips for all your needs in Pakistan. So I can guarantee you that we would meet our part of the commitment. Secondly, the investment, as you said, is small. It is not small. It's about 80 crore rupees, excluding the working capital. And we intend to keep working capital of 6 months. So I don't foresee that if we work together, we'll have delivery issues or problems or quality issues. Off कीजिएगा. I would request you please firm up your proposals, and there are 31 companies who need chargers, and I think all of us are waiting for your proposals, and it would take some time to finalize the relationship. So I think it's a process that should be started ASAP. Do we have another question? वहाँ प्लीज माइक ले जाइएगा. At the back. Hello, I am Umair. I am representing Innovi
product he also suffers. So is there any new mechanism in IMA duplication issue? थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मैं आपको IMEI क्लोनिंग और डुप्लीकेशन का आप प्लीज़ बता थोड़ा सा माइक के साथ हो जाए। जी, थोड़ा सा मैं आपको IMEI क्लोनिंग और डुप्लीकेशन का बता दूं फॉर एवरीबडीज अंडरस्टैंडिंग। IMEI क्लोनिंग और डुप्लीकेशन इस चीज़ को कहते हैं जहां पर एक जेन्युइन डिवाइस का IMEI उन्होंने कॉपी करके मल्टीपल डिवाइसेस पे कर दिया। डर्ब्स सिस्टम जो है वो इमीडिएटली इस चीज़ को डिटेक्ट करता है, और जैसे ही वो डिटेक्ट करता है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये एक IMEI इस टाइम पे 100 मुख्तलिफ नंबरों पे चल रहा है। उनमें से एक डिवाइस जेन्युइन डिवाइस है, बाकी 99 डिवाइसेस जो हैं वो फेक रेप्लिका डिवाइसेस हैं। अब देखिए टेक्नोलॉजी के साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। या तो तरीक़ाकार ये है कि वो तमाम 100 डिवाइसेस को ब्लॉक किया जाए और सबको PTA अपने पास बुलाए और कहे कि जी आप दिखाएं अपनी डिवाइसेस और कन्फिस्केट करें, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो उसका तरीका जो है, दुनिया में क्लोनिंग और डुप्लीकेशन का कहीं कोई निज़ाम नहीं था। PTA एंड डर्ब सिस्टम इज़ द फर्स्ट एंटिटी इन द वर्ल्ड जिसमें GSMA भी हमें अप्रोच किया कि हाउ वी हैव बीन एबल टू टैकल दिस। IMEI को डिटेक्ट करने के बाद उसको हमें जो जेन्युइन डिवाइस है वो मैन्युफैक्चरर से हम वेरीफाई करवाते हैं, और उसके बाद उसकी हमने पेयरिंग करनी होती है विद द मोबाइल नंबर जो उस पर चल रहा है, ताकि एक वो यूनिक आइडेंटिफायर बन के नेटवर्क पे चले। और बाकी 99 जो डिवाइसेस फेक रेप्लिकास हैं, जैसे ही वो नेटवर्क पे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगी तो उनको सर्विस डिनायल आती है। तो एट द मोमेंट दिस इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल एल्गोरिथम दैट इज़ अवेलेबल, बिकॉज इसका सोल्यूशन दुनिया में वरना किसी के पास नहीं था। जी, क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ हाथ रेज कीजिएगा। Assalamu alaikum to all of you. My question to the concerned authorities is that, first of all, I would like to congratulate you people on such a huge project of manufacturing units across Pakistan, particularly planned to build in Karachi. My question to you is, you people have planned to meet the local customer needs in near future, and after that, do you have plan to reach the global market? I mean, you are in position to in exporting conditions. You are exporting that products to other countries like Africa is a huge market, West Europe is a huge market. Is it in your plan or not? अस्सलामुअलैकुम जी। देखिए आपका जो सवाल एज फार एज एक्सपोर्ट इज़ कंसर्न, आई थिंक जो हमारी सुबह की प्रेजेंटेशन भी थी उसमें भी था कि ऑलमोस्ट 95% हम लोकल डिमांड पूरी कंप्लीट कर रहे हैं। अदर देन आईफोन एवरीथिंग इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। एज फार एज एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न, येस दिस इज़ इन द पाइपलाइन एंड एवरीवन इज़ नाउ वर्किंग वेरी एग्रेसिवली, क्योंकि हमें फॉरेक्स को पाकिस्तान में लेके आना है। वी वांट दिस इंडस्ट्री टू ग्रो इनटू ए ग्लोबल इंडस्ट्री एज वेल। हम सारे जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, सब इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि वाइल वी हैव टेकन कैप्चर्ड द पाकिस्तानी मार्केट, वी नीड टू मूव इनटू द अदर मार्केट्स एज वेल। एज फार एज वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं, अफ्रीका की बात कर रहे हैं, दीज आर ऑल मार्केट्स विच आर टू सम एक्सटेंट वी थिंक कि दे आर नॉट डेवलप्ड, बट दे आर वेरी डेवलप्ड, स्पेशली अफ्रीका। अफ्रीका का अगर आप ओवरऑल मोबाइल फ़ोन का लैंडस्केप देखें तो दे आर स्लाइटली अहेड ऑफ पाकिस्तान। But yes, there are still countries available जहाँ पे we can export and we will export into in near future as well. इसमें एक और भी पॉइंट का मैं इजाफा करना चाहूँगा, और वो ये है कि we already have around 10 global brands that are being manufactured in Pakistan. So जो नकी साहब ने बात की वो थी from the point of view of the local brands जो कि एक्सपोर्ट की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल इफ Xiaomi और Tecno, Infinix और Oppo और Vivo, they are being made in the Pakistan plant, and as the quality levels are the same as required on a global level, if we could effectively create a policy framework and an incentive structure that could make the parent company, which is based in China, to start shipping their product from Pakistan plant rather than from the Chinese plant. And I must add also Nokia in this list. And all of these brands are interested to use because they have the Pakistan plant, because they have created the necessary capacities. So there is definitely a possibility. It depends on us how we can cash on that possibility. But the global supply chains, the global value chain
sir, excuse me, I want to add something. As far as I come to know, 60% African market is a vacant market. There is a huge consumption of cellular products, and I think if you people have planned to reach that market, that is, you can earn, can generate a lot of revenue from there. Second thing is that I want to ask, this is a little bit a concern question. If you people are exporting, sorry for that, importing some raw material from there, manufacturing of soft material is here. Do you people have raw material from other countries, or that will be provided by the Pakistani market? Let me try to address this question. I think the African market is definitely a very attractive market because there are 500 million people in those countries that make up Africa. And also the Chinese brands have become very popular in Africa. But it's not only the African market, but also the Central Asian market and the Middle East market. So there are many avenues that are open. The key point, gentlemen, is to understand that Pakistani manufacturers have been able to produce the quality that has given them 90+% of the domestic market share. If the product quality of made in Pakistan was not up to the mark as compared to, for example, an Oppo product made in China, the Pakistani consumer would have rejected it, and you would have seen reviews upon reviews on YouTube and Facebook and Twitter discarding the made in Pakistan product. But the first step has been done, which is we have set up plants in collaboration and in equity partnerships with the global brands in Pakistan. We have met the expectation of the Pakistani consumer. Now we need to convince our Chinese partners to use Pakistan to export only 10% of their global markets. So, of course, there will be challenges. There are still localization needs to be done in the next 2 or 3 years. But if we can set up the necessary incentive structure, we can kickstart the export process, and with the volumes coming up, more and more localization, and as the gentleman mentioned, the plant that is coming up for chargers, there are many others coming up for batteries, and so we will move on to a path which will make this industry grow and create more and more employment opportunities and export revenues, inshallah. प्लीज़ माइक यहाँ पर ले जाइएगा. So my question is on PTA type testing. So as per the MDM regulation, all mobile devices are supposed to be type tested by PTA and approved. So I have a question that is it applicable on the device, mobile device only, or is it also applicable on the accessories such as let's say chargers or hands-free equipment and things along those lines, even the cable, charging cable. And what are the costs associated with these type testing, and is it a one-time certification or it's a recurring inspection type of certification? जी मैं आपको थोड़ा सा टाइप अप्रूवल का प्रोसेस बता देता हूँ. टाइप अप्रूवल जो है it is being done as Telecom Act Section 29 states that any terminal equipment that has to be imported or connected to local networks in Pakistan, that requires type approval. Type approval is a process that is followed by all regulators globally in every country. PTA type approval regulations जो हैं वो हमारी website पे हैं. We have been revising our regulations every year because the technology is evolving very quickly. Coming to your question, terminal equipment जो है उसमें mobile device itself आती है. जो एक्सेसरीज उसके साथ है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट, बट डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी, अगर EDB अपनी पॉलिसी को अमेंड करता है जहाँ पर चार्जर्स और ये सारी चीज़ें जो हैं उस एम्बेट में अगर आएंगी तो नेचुरली फिर इट विल फॉल अंडर दैट. अगर आप ग्लोबली देखें, जितने भी चार्जर्स अगर बनते हैं, केबल्स बनते हैं, दे ऑल रिक्वायर सर्टन सर्टिफिकेशंस. ITU इज़ द कंसर्न बॉडी दैट पब्लिशेस ऑल दी स्टैंडर्ड्स, जिनको है डिफरेंट एंटिटीज़. फॉर एग्जांपल यूरोप में EN की बॉडी करती है, अमेरिका में FCC है, CISPR स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो एप्लीकेबल हैं. तो बेस्ड ऑन दोज स्टैंडर्ड्स, इफ़ योर डिवाइस डज नॉट कंफर्म टू दोज स्टैंडर्ड्स, नेचुरली कल को जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स जिनको आप ये सेल करेंगे,
अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उन कंट्री की रेगुलेशंस उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगी टू रिमूव दोज इक्विपमेंट जो आपने चार्जर्स अगर हैं या केबल्स हैं जो अगर उनकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेंगे. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द गवर्नमेंट पॉलिसी कम्स, टाइप अप्रूवल अभी टर्मिनल इक्विपमेंट तक लिमिटेड है. सेकेंडली आपने चार्जेस की बात की थी. टाइप अप्रूवल के जो चार्जेस हैं, PTA चार्जेस $200 फॉर द टाइप अप्रूवल ऑफ टर्मिनल इक्विपमेंट, वेयरएज अगर आपकी IoT बेस्ड डिवाइसेस हैं तो उनके $100 हैं. और आवर प्रोसेसिंग टाइम इज़ एनीवेयर फ्रॉम 1 to 2 वर्किंग डेज. एंड बेस्ड ऑन ग्लोबल बेंचमार्क जो हमने किया था, Pakistan right now ranks number 3 globally out of 166 country in the dissemination of their type approval certifications. Okay, within 2 to 3 days आपको type approval certificate आपके inbox में मिल जाएगा. Just adding to what Noman Saab has said, I think since you are from the charger industry, as far as Pakistan is concerned, even when we are exporting, so the chargers have to be CE certified. Even the type approval process, we send them all the CE certifications along with it. So the chargers have to be CE certified for us to even get the device type approval overall from PTA. All right, do we have another question? Please, mic यहाँ पे ले जाएगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है और मैं एंड यूज़र के तौर पे आपसे सवाल करने लगा हूँ कि जैसा आपने फरमाया कि Xiaomi ने यहाँ पे अपना इंडस्ट्री प्लांट लगा लिया पाकिस्तान में, तो इसकी क्या वजह है कि पूरी दुनिया में नए नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं और हम आज भी एक साथ पीछे के मॉडल पे पाकिस्तान को में उसको सेल आउट कर रहे हैं? थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम. सर जी, हो सकता है कोई स्पेसिफिक रीजन का कोई मॉडल हो जो आप बात कर रहे हैं, मगर अब ऐसा नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट ऑफ एप्पल जितने भी पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स हैं जो मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं, जैसे ही ग्लोबली उनकी लॉन्च होती है वेरी नेक्स्ट मंथ और सेम मंथ वो पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं. हाँ, आप ज़रूर ये कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनके मॉडल मार्केटिंग नेम अलग अलग होते हैं. जैसे कि अगर कोई हमारे नेबर कंट्री है उसमें A32 अगर एक सैमसंग का कोई मॉडल आ रहा है या XYZ कोई भी ब्रांड का आ रहा है तो पाकिस्तान में A31 आ रहा है. तो हो सकता है उस लिहाज से आप कह रहे होंगे, मगर एप्पल के अलावा जितने भी पाकिस्तान में जितने इस वक्त ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो ग्लोबली टाइमलाइन के मुताबिक लॉन्च कर रहे होते हैं. ये ज़रूर है कि अगर इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान मतलब ग्लोबली अगर लॉन्च होता है मंथ ऑफ जैन में तो पाकिस्तान में मार्च तक एक आधा महीना ऊपर नीचे होता है, मगर ये लॉन्च हो जाते हैं. ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो एक एक साल के बाद पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा हो. Alright, please mic वहाँ पर ले जाइएगा. Is this on? Okay. अस्सलाम वालेकुम. नकी चांद कराची से. सवाल नोमान खालिद साहब से है कि PTA ने जो लोगों को इजाज़त देती है अपने मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए, उसका तरीक़ाकार जो पेमेंट करने के बाद उनको इशू किया जाता है, उसके लिए क्या स्मगलिंग से ला के इस्तेमाल हम ले सकते हैं या दीगर ज़राए से जो मोबाइल फ़ोन आते हैं वो ले सकते हैं? PTA ने किसी से रसीद या कोई ऐसा जो चीज़ है वो तलब की कभी? अगर ऐसा है तो बताइए. नंबर 1. नंबर 2, PTA जो पाकिस्तान में अक्सर लोग होम एप्लायंसेस से हटके अपना जो इसकी मोबाइल एसेसरीज यूज़ करते हैं, सॉरी वो होम एप्लायंसेस कह दिया, वो आपकी फील्ड नहीं. मोबाइल एसेसरीज जो इस्तेमाल करते हैं उसमें चार्जर, डेटा केबल्स और दीगर कई इंतहाई नाक़िस आ रही हैं मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से, यानी 2 नंबर कह लें आप उसको, पायरेसी कह लें या जो भी कुछ है. तो PTA ने कभी उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की है या उसका इख्तियार नहीं है? बहुत शुक्रिया, जवाब दीजिएगा. बहुत शुक्रिया. आपको आवाज़ आ रही है? जो आपका पहला सवाल है उसका मैं जवाब दे दूं कि जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, ये एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि शायद PTA टैक्स, मार्केट में भी जाएं वो कहते हैं जी मोबाइल पे PTA टैक्स लगता है. डब सिस्टम का लाने का मकसद जो था वो यह था कि पॉलिसी के मुताबिक हम फेक रेप्लिका और डुप्लिकेटेड IMEIs, चोरी शुदा IMEIs और नॉन स्टैंडर्ड IMEIs जब वो नेटवर्क पे कनेक्ट होते हैं तो नेटवर्क की क्वालिटी को ख़राब करते हैं.
डब्स को लाने का मकसद ये था, जब 2018 में डब्स लॉन्च होने वाला था तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको कनेक्ट किया जाए ताकि स्मगलिंग और इनफॉर्मल इंपोर्ट के थ्रू जो आते हैं उनको रोका जाए। तो पीटीए ने उसमें इस चीज़ के साथ एग्री किया और हमारा सिस्टम एफपीआर के साथ कनेक्टेड है। तमाम ड्यूटी टैक्सेस जो हैं वो एफपीआर लगाते हैं। जैसे ड्यूटी टैक्सेस की आपको इंटीमेशन एफपीआर करते हैं, हम आपको बजरिया एसएमएस, वाया ईमेल, या आपने अगर ऑनलाइन अप्लाई किया तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में वो डिस्प्ले कर दिया जाता है। उसकी पेमेंट के लिए आपको एक पीएसआईडी जनरेट की जाती है जो एफपीआर की तरफ से आती है। जैसे ही वो एफपीआर की पेमेंट आप किसी लोकल बैंक में या थ्रू एटीएम करते हैं तो आपको इमीडिएटली डब सिस्टम के ज़रिए मैसेज आ जाता है कि आपकी पेमेंट एफपीआर ने अप्रूव कर दिया और आपका आईएमईआई रजिस्टर कर दिया गया। जहाँ तक आपने बात की पीटीए को, जैसे मैंने बताया कि हमारा पेमेंट्स टैक्सेस से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है डिवाइस की टेक्निकल वेलबींग के साथ कि डिवाइस आपकी ठीक है, जेन्युइन है, उसको हम अलाउ करेंगे। अगर नहीं है तो वो डब्स आपकी आईएमईआई को रजिस्टर नहीं होने देगा। आपके दूसरे सवाल जिस पे आपने बात की काइंडली ज़रा अगर आप मुझे रिपीट करेंगे दूसरा सवाल फिर से। एक्सेसरीज जी, जैसे कि ये मैंने पहला सवाल बताया, टेलीकॉम एक्ट के अंदर जो है टर्मिनल इक्विपमेंट जो मोबाइल डिवाइस इटसेल्फ होती है, तो हमारे बाय लॉ जो है हम उसका टाइप अप्रूवल करते हैं, उसकी सर्टिफिकेशन, उसकी सारी वेलबींग का है। जैसे नकी साहब ने यहाँ पर आपको बताया, जब कोई डिवाइस टाइप अप्रूवल करने आता है तो साथ में एडेड रिपोर्ट्स उन डिवाइसेस, उन चार्जेस की करता है। तो हमारी सजेशन यही होगी कि अगर कंज्यूमर ख़रीद रहे हैं तो उन कंपनीज जिनके लोकल मैन्युफैक्चरर जैसे हैं या जिन्होंने इंपोर्ट किया, जब वो करके लाते हैं, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, पीटीए का ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है, आप हमारे सीएमएस में कंप्लेंट डालें, पीटीए विल इमीडिएटली टेक एक्शन ऑन दैट। थैंक यू। Do we have another question? Okay, can you please bring the mic here? Which person? Okay. Thank you. My name is Salman Khan and I am from media. My question is that as you know that India is manufacturing 20% of iPhone in India, and Apple is willing to increase it to 50% by 2027. So my question is that what PTA is doing regarding this case in Pakistan? I mean, do you contacting Apple and arguing them to start a production plant in Pakistan as something is already manufacturing here? What's your take on it? Thank you. मैं थोड़ा सा इसमें जवाब दे देता हूँ। देखिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जब आई थी उसके बाद पीटीए ने इसकी रेगुलेशंस बनाई और रेगुलेशंस की कॉपी हमने तमाम मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबली फ्लोट की है और उन सबको हमने इनकरेज किया है कि जो भी इसमें आना चाहे, पीटीए इज़ हियर टू फैसिलिटेट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ हियर टू फैसिलिटेट। कोई भी कंपनी जो लाती है उसको गवर्नमेंट एक लिमिट तक इनकरेज कर सकती है, बट इट इज़ प्योरली अ कमर्शियल एंड अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय अ कंपनी। तो एज़ फार एज एप्पल का जो अभी तक हमें जवाब आया उसमें उन्होंने यही बताया कि स्ट्रेटेजिकली उनके प्लान्स में इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाकिस्तान में लगाना नहीं है। बट आज किसी ने फोरम पे बात की थी कि जितने तमाम मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे बैठे हैं और कमर्शियल इम्पोर्टर्स जहाँ पे बैठे हैं, दे हैव अ बिग रोल जो एप्पल के साथ वो इंटरेक्शन करके करते हैं। तो आई एम श्योर वन ऑफ दोज कंपनीज कैन डेफिनेटली अप्रोच एप्पल एंड टेल देम कि इट कैन मेक अ वेरी गुड इकोनॉमिकल एंड अ बिजनेस केस। मैं एक और पॉइंट का इजाफा कर दूँ, हमें अपने लिए वो अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट के साथ मैच करती हो। एप्पल इंडिया में अपने प्लांट को इसलिए एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि वो चाइना के मुकाबले में अपना सेकंड बेस क्रिएट करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो चाइना का जो फॉक्सकॉन का प्लांट है उसकी प्रोडक्शन को कम करें और एप्पल का जो इंडिया का फॉक्सकॉन का प्लांट है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि उनकी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम हो। ये इंडिया के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ बन गई क्योंकि उनकी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री ऑलरेडी इतनी डेवलप थी कि वो एप्पल के स्टैंडर्ड को मीट कर सकते थे और उन्होंने एप्पल को वेलकम किया और बहुत इंसेंटिव्स दिए। अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? अब एप्पल को हम पाकिस्तान में ले आएंगे, एप्पल हार्डली 20-25 हज़ार यूनिट्स पर मंथ बिकता है पाकिस्तान में, इट्स नॉट अ वेरी बिग क्वांटिटी। आई थिंक हमारे लिए जो, और ख़ास तौर पर मैं ईडीपी सीईओ साहब बैठे हैं, हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि चाइना इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ सेकंड मैन्युफैक्चरिंग बेस। चाइना +1 स्ट्रेटजी इज द वे फॉरवर्ड फॉर अस, क्योंकि चाइना को इस वक्त यूएस और यूरोपियन मार्केट से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स हैं जो वहाँ क्रिएट हो रहे हैं चाइनीज़ मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के लिए। सो चाइना इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो हमें वो देखना चाहिए कि हम किस तरह से
चाइना को ये कन्विंस कर सकते हैं कि वो अपने 127 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट है उसका 10% पाकिस्तान मूव करे, फिर 20%, फिर 30%, फिर 50%। अब आप इमेजिन करें 127 बिलियन डॉलर का 50% पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा हो तो कितना बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक तूफान जो है वो क्रिएट होगा और कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे हम, कितनी एक्सपोर्ट जनरेट कर सकेंगे। तो हमें ये देखना है, आईफोन अपनी जगह है, एक दिन वो आ जाएगा, बट दैट इज नॉट अ गेम चेंजर। द गेम चेंजर इज हाउ वी कैन पार्टनर विद चाइना under CPEC B2B cooperation and bring relocate their export from China to Pakistan. एक और चीज़ ऐड जस्ट कर दूं फॉर नंबर सेक, अगर आपको पता हो आउट ऑफ दिस 21 मिलियन जो हमने फिगर्स पब्लिश किए, इसमें एप्पल का शेयर आपको पता है कितना है? इस साल उन्होंने टोटल पूरे साल जो जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 22 तक 83,000 डिवाइसेस टोटल लेकर आए हैं, जिसमें तकरीबन 15 से 20 हज़ार कमर्शियल चैनल्स हैं, बाकी इंडिविजुअल्स अपने लिए लेकर आए हैं। तो नंबर इज ऑल्सो वेरी लो। All right, do we have, oh, okay, can you please bring the mic here? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आसिम साहब से है। आसिम साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका एज ए मैन्युफैक्चरर कि आपने हमें इतना अच्छा फैसिलिटेट किया और हमें पाकिस्तान में अच्छे तरीके से काम करने का मौका दिया। अच्छा, जिस तरह कि आपने SKD और ये पार्ट्स लेके आने में हमें एक स्पेशल पॉलिसी मुतारफ़ करवाई, इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट में भी आप कोई स्पेशल हमें ऐसी चीज़ करके दें कि ताकि जितना हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि अभी मैं पिछले दिनों में अपने एजेंट से और कस्टम काम से कुछ एक्सपोर्ट की बात कर रहा था, तो वो मुझे कह रहे थे कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो जो ड्यूटी आप पे कर चुके हैं वो आप वापस नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि ये कैसा हो सकता है कि दुनिया में तो ऐसे होता है कि जो ड्यूटी पे हुई होती है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वापस हो जाती है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल वापस हो सकती है, लेकिन उसमें ये है कि आपको जो माल आप एक्सपोर्ट के लिए लेके आ रहे हैं आपको पहले अपने वहाँ पे इंटर करवाना पड़ेगा कि ये माल मैंने एक्सपोर्ट करना है। अब वो चीज़ हमारे लिए फिजिबल नहीं है, इसलिए फिजिबल नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं एक 30,000 पीसेस लेके आता हूँ, उसमें से मैं 5,000 फ़ोन कहीं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसको मैं 5,000 को कैसे अलहदा करके करूँ? तो वो थोड़ा सा उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्यूजन है। अगर ऐसा है तो इसको जो है वो कैसे तरीके से आप इसको दूर करवा सकते हैं? क्योंकि हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। हो सकता है शुरू में हमारी क्वांटिटी कम हो, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको अच्छे नंबर्स पे ले जाएंगे। थैंक यू। EDP के पार्ट पे जो एक्सपोर्ट की आपने पॉलिसी देने की बात की है, उस पर एसोसिएशन ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस के साथ हमारी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। उस पर एसोसिएशन ने जब लास्ट टाइम मिली तो उस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस थी फाइनेंस की साइड से। मेरे ख्याल में ये लास्ट वीक की मीटिंग हुई थी और उसके बाद हम कोई प्रपोजल देंगे। दूसरा सवाल मैं चाहूँगा कि ज़ीशान मियां नूर साहब आपका जवाब दें, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं, कि इन्होंने कैसा किया है। अगर वो आपको मुतमईन कर देंगे, इन्होंने भी तो सारी प्रोडक्शन जो भी इम्पोर्ट किया है उसका कोई पोर्शन एक्सपोर्ट किया है। सेकेंडली, इफ देयर इज समथिंग वी विल रिक्वेस्ट नुमान खालिद साहब ऑल्सो, लेकिन ओवर टू ज़ीशान साहब, काइंडली आप अगर जवाब दें। अच्छा इरफान साहब, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये है कि अगर आपको कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है ना, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी हुई है, एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ स्कीम। आपने जो भी चीज़ जब भी रॉ मटेरियल मंगाना है, ठीक है, आपने उस वक्त वो डिक्लेयर कर देना है, तो आपकी जितनी टैक्सेस और ड्यूटीज़ इवन RD सब ज़ीरो हो जाएगी। आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको पंजाब रेवेन्यू टैक्स अगर पंजाब में इंपोर्ट किया है या सिंध रेवेन्यू टैक्स अगर सिंध में इंपोर्ट, सिर्फ आपको ये टैक्स देना है क्योंकि वो स्टेट का टैक्स है। रेस्ट ऑफ आपको 1 रुपये का टैक्स देना है। इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर R&D अलाउंस के ऊपर डिस्कशन हो रही है, वो इंशाल्लाह अनकरीब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। इस वक्त हमारा जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल हमारी जो नेबर कंट्रीज़ है
या सराउंडिंग्स है उसमें हमारी कॉस्ट इफेक्टेड नहीं हो सकती, उसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन मिलकर काम कर रही है। फॉर द टाइम बिंग अगर आपको टैक्सेस के हवाले से बेनिफिट चाहिए तो इसका एक कानून है, उसके मुताबिक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आप जो भी एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है वो पीटीए को आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो वाइट लिस्टिंग में उसी तरह से आपको चीज़ें मैनेज कर देगा। ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छे सवालात पूछे और उनके आई होप कि आपको डिटेल्ड आंसर्स भी मिल गए। हमारे पास एक नहीं बहुत सारे यहाँ पर डिटेल्ड आंसर्स देने वाली शख्सियात मौजूद रहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब लोग यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त हम सबको दिया और इतने डिटेल के साथ जो है वो आंसर्स भी लोगों को दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विद द परमिशन ऑफ चेयर, एक तो हमारे यहाँ ये चाय का इंतज़ाम है, प्लस जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आई हैव बीन टोल्ड कि 6 बजे तक वो स्टॉल्स पे रहेंगे। सब स्टेज पर ही हैं। और मुझे चेयरमैन साहब की तरफ से 2 अवार्ड्स हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे COEDB को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ, और चेयरमैन मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आप भी काइंडली तशरीफ़ लें। तो जो जिनके जो भी रिमेनिंग अवार्ड्स हैं उनको आमिर साहब और ज़िशान मियां नूर साहब भी स्टेज पे ही रहें। अगर प्राचा साहब तशरीफ़ रखते हैं तो वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ, ज़िशान साहब और आमिर साहब, एंड वी विल अनाउंस मैडम नेम्स एंड ऑलराइट, हम कुछ अवार्ड्स हमारे ऐसे हैं जो कि अभी हमने देने हैं, तो मैं दावत दूंगी मिस्टर हसनैन को जो कि मोबो मोबाइल कंपनी से हैं। प्लीज़ स्टेज पर आइए और अपना अवार्ड वसूल कर लें। अब मैं दावत दूंगी मिस्टर फैसल मोती को जो कि यूनाइटेड मोबाइल कंपनी से हैं। प्लीज़ स्टेज पर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं मिस्टर आसिम अयाज साहब को दावत दूंगी कि प्लीज़ स्टेज पर ही रहिए। आप GM पॉलिसी ED भी हैं सर, प्लीज़ क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा। थैंक यू सदब। Honorable Chief Guest of the occasion, President, Chairman, Pakistan Mobile Phones Manufacturers Association, government officials from PTA, from Special Technological Zones Authority, NTC, FBR, officials from Ministry of Industries and Production, officials from Engineering Development Board, as well as the participants from the industry. On behalf of Minister for Industries and Production, Secretary Industries, CEO EDB, and myself and my team, I thank you all for participating in this event. This was indeed a flagship event of EDB, and your participation has made it a success. Thank you very much. Thanks to the organizers from the private sector, and now we'll break for tea. We'll have a tea break, and the exhibition will be till 6 o'clock, and it's open for general public. I once again thank you, the association, and assure you that EDB is there to solve your problems.
Inshallah, in future, we'll succeed further. Thank you very much. And with the permission of Chair, I declare this event closed. Thank you, sir.